He is an entrepreneur, and he is also he is mostly engaged in education. Like he provides services to the youth where they can go ahead and study abroad, and he also wants to set up some organization related to, I think, environment or something like that. It's a jute products, right? Correct, sir. Okay. Yeah. Yeah, So you're correct. he has something to set up for like some jute products which could be used in market. So it is environment friendly. So this is, anyways, I would invite Vivek to share your ideas or whatever things you are doing, and maybe we as an spectator today, we can suggest him or advise him. Also, we can if we have any interest in, then we can also connect with him. Correct, Yeah. correct. So, first of Vivek, all, over to you. okay. First of all, sir, it's my pleasure speaking with people like you and other like participants in the meeting. So I'm speaking on behalf of my team, that is Jute Land. We have a vision, the simple vision. I will not try to prolong the conversation long. Just I have two principle and two philosophy. Is first we have to work directly. We have to attack directly the pollution or pollutants in the society, like carry bag and all this thing that we have plastics related things. So over there we are going to attack. And the second thing is that unemployment is a big matter still in our state. Recently, the Supreme Court of India has termed a statement that is skill deficiency. So with our, it's also our purpose that whosoever will join with our organization, we will train them with the business skills. We will also train them business communication skills and how to make them independent in sales and other things. And we want to have a long-term association with us. For the better understanding of our motto and purpose, I have made a presentation. So I would like to take your permission, if you could grant me to share the screen. Ankit, could you make him co-host? Done, sir. Yes, you can start, Vivek. Okay, sir. Just a minute, sir. I will take few time to share my screen in front of you. It may take little time because generally most of the time I'm not using Zoom. I'm dependent largely on Google Meet. Okay. Yes. No worries. We all are new to this new technology. No, we generally I use, but due to some privacy and all this thing, I keep on using these things only. विवेक डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you'll come back. So I met with one of the persons इनके team से. Mute पे, Ritik mute करो.
So I met a person from his organization. जिस दिन पहले दिन जब हम लोग गांधी मूर्ति के पास कर रहे थे ना, तो उस समय वहाँ पे इनके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग आए थे, तो उनसे नंबर लिया, फिर उन्होंने बात किया, फिर बोले कि कुछ कुछ आइडियाज हैं प्लास्टिक के ये में, तो मैं बोला ठीक है, एक बार हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं. So let's see if he comes back. आज एक नॉट अ रिसोर्स पर्सन से, बट एनवायरमेंटलिस्ट एक हैं, तो उनसे मेरे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो मैंने आप लोग के बारे में उनको बताया था. एनीवेज, विवेक इज बैक. या Okay. कैन वी डू इट नाउ विवेक? और Yes, yes. Can you make me co-host, please? Yes. यस, इट्स डन. Just a minute, sir. It's taking little time. Can you see this screen, please? Is it visible? Yes, sir. Yes, it is visible. Okay, sir. Yes, sir. Thank you. Okay, so this is what what I'm going to present with the help of this PPT in front of you. See, the basic is that we believe in no pollution as large it is possible, and because it's very, very important for sustainability that we live our life with the ecosystem. For that, we have come up with a project called Jute Land. We are the house of premium jute products. Basically, we wish that to fight along with fighting with pollution, we are also coming up with the creative things so that it may provide ultimate carriage and carrying system, handbags, and all those things. It will also provide livelihood to many people and employment opportunities for many of the young people. So something about me. I'm the founder of Kalinga Euro, as sir was talking primarily, and now I'm also like founder of Jute Land. I also have a team member. So this is Miss Archana Gautam. She is the managing director of Jute Land. And here is Rajiv Kumar, with whom sir has met in Patna. He is the manager. And Rahul Gautam, unfortunately, he is not present now. So he's the analyst and chief executive officer as well. So what we wish from this Jute Land, we are trying to make difference. And how we are difference? First, we are coming with, there is generally a saying that if there is any problem and if you want to be successful, try to solve that problem. So pollution is really a big problem. Whenever we go in the streets of few days back only, it came in a survey that Patna is not only one of the most polluted city of India, but in the world as well. And I assume that plastic is one of the biggest contributor of that. So we have got some creativity that why can't we come up with a solution to this problem? And that is where we are coming up. It has a potentiality to provide employment opportunity to many. Okay, and we are working with a single philosophy and principle that we want to make this earth, this our environment, ecosystem sustainable, not only for us, but for our future generation as well. So at Jute Land, we are very much consistent with our aim, objectives, and purpose, and we are determined that we want to ease this burden of pollution, as long as possible. Then what is our mission? We wish that generally when we go to the market, we very casually ask to the person near us, कोई भी हमें एक बैग दे दो सस्ता वाला. लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि when you are carrying a carry bag, do carry with the sense of responsibility. Okay. And we have a team. They are really hardworking, and we are working with a very humanistic approach. We have experience in our own sector, but we are very, very much new.
but at the same time, we are aspirational to our objectives as well. So what all services we provide, we are providing, as I was talking in the very beginning of our talk, that these are our three objectives. First, that we are manufacturing a jute bag, which are affordable, fashionable, good looking, and it will give a difference to your hand and to your personality as well. It will also provide employment opportunity to the youth. What we are targeting so far, we have set a target that in next 2 years we will try to reach at a position wherein we have capacity to provide employment opportunity to 100 youth in our state or in pan India. We will be also providing them skills, particularly in business communication skill and as per the industrial requirement. So which is indeed very, very much important for every individual these days, because job doesn't mean only government job. So this is our contact number. Whosoever, currently we are operating it from Bihar, Patna or Patna, Bihar, but we also aim to look at some different parts of India as well. So this was a very short and brief introduction about Jutland and our team. It is really so nice of you. That thank you. Now we are open for other sets of questions. Thank you, Vivek. I think it was very clear set of points to be discussed, and you managed it pretty well. Great. Thank you, sir. So yeah, guys, if you have any questions, like whatever you Even feel. other of our two members are also present here. Miss Archana Gautam is there. Let me ping her. Hi, Archana ma'am, are you there? Yes, I'm also here. Good evening, everyone. Very good evening. So guys, sir, if you have any set of question, you are very, very much welcome to ask the question. We will be really happy to answer your questions. Absolutely. Come on, anyone? Go ahead. आप लोग you guys are most welcome to ask your questions. आप ये भी जान सकते हो how we are operating, हमारे short term और long term plans क्या है. सर जो हमारे टीम मेंबर आपसे मिले थे, Mr. Rajiv Kumar, he is also present. Okay. For some official work, he is in Delhi right now. So Mr. Rajiv, are you there? Yes, sir. Hi, everyone. Hello, I think your voice is too low. Kindly check your mic. Okay, मेरा एक सवाल है कि आपके जैसे आप तो ये जूट बैग्स बनाएंगे, you will be producing this. Who would be your customers? Okay, sir. Is it a corporate thing, or wherein you would be giving it to the corporate houses, or will it be sold at the retail stores? Sir, we have an objective. First of all, as you know, we are like determined to. We have a very target audience. First of all, we want to give it to those who really have value for this. Like when my team member met you in Delhi, in Patna, okay, there are many people who really appreciated this thing. Okay, so that was our pilot project. We wanted to know how these things are working, and so far, according to our pilot project, we are very much enthusiastic and motivated to come to know that people are really appreciating it. So our products will be it will be taking care of different section of societies. Okay, where any person affording 100 to 200 rupees can get use of our product. Okay. Okay. Yes. Sounds good. And Basically, yeah. Yes, please. Sir, how would it be like accessible, easily accessible to everyone? Yes, it is easily accessible. Right now, we are very much dedicated to Patna and New Delhi. And if you wish to reach out to us, I think I have provided my number, and you can also check on our Facebook page, Jutland. Over there, you will come and you can easily connect with us. In a very short period of time, we will be also providing home delivery, and like in area, we are going to open our retail centers in Patna as well.
we want to establish as a brand, not like a jhola type of system, wherein people will carry it with a sense of prestige. एक ब्रांड जैसे हम बैग को लेते हैं ना, उस सेंस से हम इसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं, एंड वी आर डिटरमाइंड फॉर दैट. जैसे कि आप अगर जो अपने पास में कॉलेज स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल, ऑफिस गोइंग पीपल, स्कूल स्टूडेंट्स, फॉर द सच पीपल वी आर हम लोग प्लान कर रहे हैं ओपन करने के लिए. और जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो वो इतना क्लासी भी होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने अरे झोला उठा लिया यार, अच्छा नहीं लग रहा. वी आर ट्राइंग टू कीप इट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ 21st century. Okay. Yes, Great. sir. So is प्रोडक्शन इसका शुरू हो गया है या फिर अभी होना बाकी है? Right now we are in the pilot project, and very shortly we are aiming to start our production right from Bihar. Obviously you and your team will be warmly welcome on the opening ceremony day. Sure, thank you for the invitation. Yes. So now Mike, does anyone have any questions to ask? Because I don't want to like just keep on talking. और सब कोई बात कर सकते हैं, अगर जो लैंग्वेज बैरियर है तो मैं और सर हिंदी में भी हम लोग बात नहीं, हिंदी इंग्लिश दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. यस, एंड प्लीज यार वोकल बनो, हर एक कोई क्यूरियोसिटी रखो लर्न करने के लिए. दैट्स रियली वेरी गुड. सो माय क्वेश्चन इज हाउ कैन वी हेल्प यू एज अ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? यस सर, देखिए इसको ओपन करने का पहला जो पर्पस वही है कि अभी भी लाइक मैं अगर जो थोड़ा सा सोसाइटी से कंसर्न होकर की बातचीत करूं, तो अगर जो हम प्लास्टिक की एक लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन देखें तो बहुत ही लंबा है. हर एक साल पटना में ऐसे बाढ़ आते हैं और दैट जितने भी ड्रेनेज होते हैं वो सब चौक कर जाते हैं. तो मान लीजिए हमारा एक पर्पस है कि हम उसको रिप्लेस करें प्लास्टिक से. फर्स्ट थिंग, बिहार में हमारा एक जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है जो अभी उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है. तो हमारा पर्पस है कि उन किसान, जो हमारे किसान भाई लोग हैं, भाई बहन हैं, उनको भी हम एक अपॉर्चुनिटी दे कि उनको जॉब मिल सके, उनके इल्ड के बराबर. जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर का एम है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो यहाँ से उनको भी फायदा हो सकता है. तो एक this is a primary sector, tertiary sector, manufacturing sector. So all three sectors of an industry is connected with this. So it has got huge potentiality in terms of and इसका social और environmental impact बहुत ज्यादा है. एक मे बी आपको थोड़ा फ्लॉरी लगेगा, लेकिन एक कल मैं अपने टीम मेंबर से डिस्कस कर रहा था, तो बस मुझे आई एम वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस. हमारा ये भी प्लान है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाने के बाद एक सोशल इशू जो हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा है, डॉरी सिस्टम, तो उसको मोटिवेट करने के लिए हमने ऐसा सोचा है कि वी विल कम ऑन एंड पीपल लाइक यू ओनली. अभी ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि जो भी न्यू कपल शादी करेंगे और अगर जो डिसाइड करते हैं कि वो दहेज नहीं लेंगे, तो हम 100 लोगों के अपनी तरफ से फ्री झोला जूट बैग का प्रोडक्ट हम उनके घर तक पहुंचाएंगे. तो ये हमारा सोशल कंसर्न है, और इससे इन्वायरमेंट को भी ऑब्वियसली फायदा होगा. आप कैसे, जैसे मैं आपका जो क्वेश्चन ये था कि हाउ यू कैन बी हेल्पफुल, ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत अच्छा है. आपने हमें हेल्प करना इनफैक्ट चालू कर दिया है सर. वी हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू पिच आवर आइडिया, टू टॉक विथ यू. आई होप with the help of you we will be reaching out to another hundreds and thousands of people. Definitely. Yes, for sure. And one thing that I would like to really highlight, जो कि मैं over telephonic conversation में भी आपको मैंने बताया था कि जैसे मैं जॉब के लिए हमारा जो स्टेट है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब नहीं है अभी तक के लिए, बट बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने प्लान बनाया था. अभी ट्विटर पे एक कैंपेन भी चला था, इंडस्ट्री इन बिहार. तो इन सब चीजों से मैं मोटिवेटेड हूँ. आई एम वेरी मच एक्टिवली कनेक्टेड विद इंडियन डायस्पोरास इवन फ्रॉम अब्रॉड. सो उनसे आइडियाज हम लेते रहते हैं. तो प्लान हमारा यही है, इंडस्ट्री इन बिहार को भी प्रमोट करना है.
और खास करके जो कॉलेज गोइंग, इसीलिए मैंने पहले आपको पूछा था कि इसमें बहुत सारे वैसे स्टूडेंट्स होंगे जो अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, तो उन मेरे फ्रेंड्स के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर जो चाहो तो एज ए पार्ट टाइम जॉब हमारे साथ में कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग योर लाइवलीहुड, योर पॉकेट मनी, वी विल बी ऑल्सो ट्रेनिंग यू in different sectors of industry, like आपके communication skill, presentation skill, resume building। आप देखो सिंपली ये है कि अगर जो आप एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर बनना चाहते हो, सो वी कैन बी प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमारे एक्सपोजर्स हैं। जैसे सर ने बताया, हमारा ऑलरेडी एक वेल सेटअप कंपनी है कलिंगा यूरो, आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे हम बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज का एक्सपोजर देते हैं और पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो इसको हम कॉम्बो रखने वाले हैं, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Great. थैंक यू सर। So Vivek, maybe we will get back to you. Maybe we can have some connections again. अभी बच्चे इसको थोड़ा process कर लें। जी जी। ठीक है, और we will have discussion around this also in जब हम लोग मिलेंगे तो next time Saturday को। श्योर श्योर। And देखते हैं कि फिर हम लोग इनका अभी जैसे सवाल तुरंत तुरंत तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी लोग बाद में थोड़ा सोचते टाइम लगेगा प्रोसेस होने में। Yeah. So maybe we'll look into that. And Yes, thank you so much for It's coming my pleasure, sir. and It's my pleasure. sharing your ideas and the views that you want to do. Thank you so much. It's my And pleasure. thank you to the other members of the team. Yes, yes. And thank you everyone. All these, how many, what is the number of participants? Oh my God, 28 participants are there. So I would like to name few so that obviously a sense of credibility must go. Suman Kumari, then Manya Singh, Pallavi, and who are Rahul Gautam are okay, have also joined. Then Pooja, it's really so nice that you have joined this. I hope अगर जो आप लोग 2-4 और क्वेश्चन पूछो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं अपने आइडियाज को आपके सामने और अच्छा रख पाऊंगा। हर्ष, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? खुशी रॉय, खुशी सिंह, लक्ष्मण श्री। Sir, it was nice to hear you. Sir, if you have time, sir, then you should come to meet us, sir. Sure. I'm planning to come someday in Bihar. So once I'm there, I will. मैं सर से मिलना हमारे लिए भी बहुत खुश. I will be very happy and honored to meet with sir. So surely I will come. Sir, you must come at Tarumitra Ashram, sir. Sure. Thank you for the invitation. Okay. Most Thank welcome. Yeah. So Vivek, now I think we have to start our general meeting, like of the team meeting that we are doing. Yes. So maybe you people can excuse us for this. Yes. Fine. Take your time, sir. Thank you. And thanks that you have given us an opportunity to speak with you. Thank you, sir. It's my pleasure. Have a nice day. Yeah. Our pleasure as well. Okay, we have Radha ma'am here. Okay, this is a surprise for all of us. And ठीक है. So finally, Radha ma'am, you are here. Hello. Hello. Yeah, you are. Hello, Darshan. Sorry, I was a little bit late while joining. A little bit confused, maybe. Yeah. I think it was a miscommunication somewhere. Yeah. No, I got confused maybe because of that. I thought it was tomorrow. Anyway, thank you, Darshan, for inviting me. I've joined now. Yeah. So, guys, we already met one set of people, and this is Radha Bengiri. Bengiri.
Bengeri, I'm so Bengeri. sorry. Bengeri. Yeah. Bengeri. Radha Bengeri, and she is a passionate civil engineer as well as environmentalist. She has studied civil engineering and worked for she undertook civil and environmental designs, and she has executed it. She is also running a organization or a company, I should say. No, it's a lab. It's a laboratory. Lab, yeah. So Shri Krishna Aqua Engineering Works. Yeah. And they provide technical services to industries in the field of inspection, certification for pollution and other stuff. And they're servicing more than 100 industries as of now. And she's involved in designing, construction, and maintenance of effluent sewage treatment plants. So do you know what is sewage treatment plant? जो हमारे घर का grey water जो जाता है, maybe into the rivers. So before it goes into the river, all these effluent treatment plants, they work on those grey water and make it sure that our rivers are not getting polluted. Though we have very few of the sewage treatment plants or effluent treatment plants, but yeah, there are. And yeah, and she works mostly on water testing, emission testing, noise pollution, lux, soil parameters, and she is also an environmental expert for Voyance Solution. They are working for I think for some rail infrastructure. Railway, rail infrastructure. Okay, yeah, okay. So Radha ma'am, this is my team of interns, students, volunteers from various colleges who are working on this campaign on fumes-free Holika, or let's say it Nature-friendly Holika. Yeah, that is what I wanted. Thank you, Priyadarshini. Nature-friendly Holika. So, is anyone interested to share what exactly we do and what we are doing with? She already knows it, but maybe just a little bit of conversation we can start. Yeah. Priyadarshini, would you? Oh yes, sure. Yeah. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, we are the interns and some of us are volunteers in Tarumitra, and we are working on a solid waste management. But right now, since Holi is at hand, and we see that people they burn plastics, tires, and waste materials in Holika Dan in Agja. But our ancestors, they used to celebrate Holika Dan by burning those holy items like pual, ghee, goitha, and these items. But we are just ignoring those things, and we are burning all those plastic materials and thinking that we are burning the evil Holika. But in reality, we are burning the Prahlad. So, ma'am, for this campaign, we are launching some Nukkad Nataks in different spot areas of Patna. We have done it from 28th of February. We have done at so many places in Patna, like in Patna city, like in Gali, on Mohalla type, where people they come and we make them aware through our Nukkad Natak. Ma'am, if you are free, then you can also come on next Sunday. She is not here. Oh, okay, sorry, ma'am. But Thank yeah, you she so has seen, much. I think, your videos. Yeah. Yeah. Go ahead, Radha. Yes, ma'am. ma'am. Actually, Darshan, thank you so much for inviting me to this video call or this meeting. I have been seeing Priya, first of all, wonderful talk, and your voice is so sweet. And I have been seeing your videos on YouTube, which Darshan has been sending me the link. And Tarumitra, now I am a regular watcher of that. And about this Thank you. yeah, Holika, I have been watching. Thank you, ma'am. Yeah, and I liked it so much that these children are doing a wonderful job.
And Darshan, one more thing I wanted to say that I am always involved in all these years, maybe for 20 years, I am in this, so to say, a very commercial line of my profession. Like it was a need of the time for me, I moved into commercial. But abhi mujhe lagta hai कि something I have to do for social impact also. So I am very much interested to do some social work and which will give satisfaction to me. Uh, so Darshan, I really want some advice from you that how do I start giving some social impact on solid waste management, which is a huge subject. तो मुझे अभी सोर्स सेग्रीगेशन पे काम करना है या फिर अवेयरनेस पे काम करना है मेनली ऑन स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स तो एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज पे काम करना है which is very much a groundwork to be started with. तो मैं कैसे start कर सकती हूँ because I am stationed in Karnataka. I am in south of India. तो हुबली करके एक 2-tier city है तो वहाँ पर हूँ where people are not that aware about all these things. So how do I start with all these things? That will be my first question to you, Darshan, and all the children over here, all the students over here. Okay, so I can definitely come up with a, see, it's a not very easy thing, but yeah, within few days we can start something. See, we already have answered that you want to start with the youth and the children, with the colleges and schools. So definitely we will have to connect with those schools. There are already norms which ask the schools to, so the kids have environmental as a subject as well, but it is also a compulsory thing. So the way Tarmitra functions is we go to the schools, we have a club, eco club. There are like eco clubs in school. So we, if they don't have, we develop one for the school, and whatever name they want to put. Here generally the schools, they name it with the name of Tarmitra because majorly the Tarmitra volunteers and they go and manage all these things. So they call it Tarmitra Club. Okay. But they are free to choose their own names. So once we have this club, then we design some activities with the student. Maybe it could be a weekly activity, depending upon how many volunteers we have at hand who can go and engage those kids. We have some PowerPoint presentation and engagement activities through which kids, they learn. We do some activities. Sometimes we play some games. Like one of the games you saw in the Nukka Natak thing. Yes. Yeah. So we have many more games which we play as an environmental tool. So that I can share with you. And maybe if you want, we can also support you in, like, how we can support you in connecting with the schools. And maybe as this corona has taught us to, as we are connecting online from different part of India, right? So, and same way since last 2 years, most of the students, they have been 2 years, they have been engaging online studies. So I'm not saying that everybody is comfortable with it, but it is again a new tool through which we can engage or we can have a communication. So now we don't have a communication gap, right? So that is easier. So maybe sometimes we can do online sessions with the students of some schools there, and we can start off, or maybe we can have a set of volunteers in your city from the college, wherein these interns can also help, in doing a capacity building. The way I did capacity building for them. We can come together, we can do online capacity building. And sometimes we can have a place where they can, or maybe we can talk to the college, one of the colleges, which can provide a space maybe on Saturday or Sunday where the kids can come and meet together. Okay. And if they want to do something like which can be done physically, they can do there. Like these kids, they made posters, banners by themselves. So these are like things which can be done, and we can definitely support you because we have expertise in it. So I will definitely start with the groundwork
that visit some schools and colleges and some younger generation people. And I will just check who all are ready to join to this group. Yeah, sure. Definitely, I will come back to you with more things to go in future. Absolutely. And yeah, so maybe for the school students, I had designed a 6-month engagement program. Okay. Yeah, it's called Ecological Leadership Development Program. Okay. So in this 6 months, we meet like every fortnight with the student. Maybe we can start off with the online, and I will tell you what are the activities that could be done. Okay. Okay. So yeah, once you can also go, or maybe we can have a volunteer there. So all these things can happen. Yeah. So I will share those files with you. Yeah. Or maybe I'll put it on the drive, the common drive that we have said. So Yeah. it can be used by other people also. Yeah. Yeah. Sure. Thank you, Darshan. You're welcome. Thank you, ma'am. Thank you. So shall we start our meeting now? How was the day? Sir, amazing. Amazing. Kya hua? Yes, sir. What happened today? Kya hua? Sir, we met with some like really wonderful personalities. Sir, especially Ashok Ghosh, sir. Okay. तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कम से कम, बताइए. Sir, he was really very vocal, like student friendly, very interactive and down to earth, and very positive man. Sir, who is Ashok, sir? He is the chairman of State Pollution Control Board. Oh, Khushi, Yes, sir. how is your headache? Sir, I feel I'm getting sick. Sir, I think tomorrow I will fine. Okay. Sir, but after meeting Ashok Ghosh, sir, it was wonderful, sir. The way he said, like in that age, he taught us many things, like how to be energetic and how to balance the personal life with professional life. I want to tell everybody that sir is doing two work at the same time. At the time of वो अभी प्रोफेसर भी हैं और वो अभी स्टेट कंट्रोल बिहार स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी हैं. तो सर ने बताया हमें कि कैसे वो मैनेज करते हैं अपने घर को, अपने ब्यूरोक्रेसी को और अपने एज अ प्रोफेसर अपने लाइफ को. तो काफी अच्छा रहा उनसे मिलके. उनके अलावा हम लोग शीला ईरानी मैम से मिले तो उन्होंने बताया कि पंक्चुअलिटी और टाइम कितना ज्यादा अहमियत रखता है हमारे लाइफ में. शी वाज लाइक कैसे जल्दी और फटाफट काम किया जाता है. तो उनसे शीला ईरानी मैम कौन है, उनके बारे में? शीला ईरानी मैम पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है सर, एडिशनल कमिश्नर है एंड सर वो रिटायर्ड आईपीएस भी हैं एंड सर शी वाज लाइक She is not retired yet. She is in her service. सर वो आईपीएस से रिटायर्ड शायद हो चुकी हैं एंड अभी वो सर वो मैं पढ़ी थी कहीं पे. Yes, sir. She is retired IPS. Okay. Thank Sir, you for the how can you information. see whole See, group even for- I learned today. Okay. Sir, I was not aware. I was not aware about her. Sir, I think I read somewhere No, that no, she is a retired IPS. You are right, Khushi. I'm right, no? Okay. Yes, yes. that is what I'm also saying. I learned it today from you. Okay, sir. Sir, I thought that Thank you are you. telling. Yeah. Yes, sir. We done a small research on her before meeting her. So there we find about her. Sir, before meeting our pro busy, sir. Yes, sir. She is right.
And sir, also from the student from the Amity, I want to tell them that our province is very much impressed with Amity student who are doing internship under this Taru Mitra, and also impressed with the volunteers of Amity who is doing who is part of this campaign. He was so impressed and said, जब हम लोग वापस गए, when we informed her that सिलाई रानी मैम आना का वो सर दोनों ने हमारे साथ फोटो भी क्लिक करवाया, तो प्रोवीसी सर सेड कि मैं क्यों पीछे रहूं, बच्चों के साथ मेरा भी फोटो बनता है। एंड सर उन्होंने भी हमारे साथ फोटो क्लिक करवाया, और सर वो फोटो उन्होंने पूरे जो फैकल्टी ग्रुप है उनका शेयर किए, और उसके बाद सर जो फैकल्टी हमें मिल रहे थे वो फैकल्टी बोल रहे थे आप लोग कहाँ गए थे, आप लोग कहाँ गए थे, प्रोवीसी के साथ आप लोगों का फोटो शेयर हो रहा है ग्रुप में, और सबके साथ का फोटो शेयर हो रहा है। तो सर वंडरफुल एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर, थैंक यू तारू मित्रा। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। यस सर। Sir, all just because of you, because आप हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दिए, नहीं तो हम लोग जा भी नहीं पाते, इतना रिस्ट्रिक्शंस हो रहा था हम लोग पे। यस सर। सर हम लोग ये भी सीखे सर कि मतलब अगर किसी चीज के पीछे लग जाए ना तो वो चीज हो जाती है। सर आई थिंक सिर्फ एक इस दिन की मीटिंग के लिए हमने प्रोवीसी सर के चैम्बर का 7-8 बार विजिट किया है। ये तो टेक्स्ट तो बहुत सर देख के हंसने लगते, लाइक यस आई गॉट योर मैसेज। चलिए, सो आप लोग का जो ये जिद है ना, ये मुझे होप देता है। जिद इस बात के लिए कि जो मैं सही चीज कर रही हूं या फिर कर रहा हूं, तो वो मुझे करना है और मुझे कोई रोक नहीं सकता, और वो मैं सही तरीके से करूंगा। उसमें कुछ सही चीज को अगर आप गलत तरीके से करें तो वो चीज गलत हो जाती है ना, लेकिन सही चीज को सही तरीके से करें तब उसका वैल्यू बनता है। सो यस, दैट इज योर यूएसपी आई वुड से। ग्रेट। तो चलिए, एक चीज तो हो गया कि आज हम लोग मिल लिए, आप लोग भी मिल लिए, और इट वाज अ गुड डे। वी ऑल्सो, या ऋतिक बोलिए। ऋतिक। नो नो सर, नो सर। अच्छा, आपका हैंड रेस किया तो मुझे लगा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर मैं ये भी बता देती हूँ सभी इंटर्न्स और वॉलंटियर्स को कि सिलाई रानी मैम हमारी सारी बातें सुनी और सारी बातें मानी भी। उन्होंने हमें, जैसा हमारा डिमांड था कि अगर कोई उनके पास सॉन्ग है जो हमें दे सकती हैं, जो कि हम जब जाते हैं कैंपेन करने तो वहां पे बजाते हैं, एक तो टिक टिक ही बजाते हैं, दूसरा कुछ भी पैट्रियोटिक काइंड का रहता है वो बजाते हैं, तो उनसे हम लोग सॉन्ग का डिमांड किया था। वो बोली है कि अभी उनका एक जिंगल है जो कि नया ही अभी लॉन्च ही हुआ है, वो हमें वो देंगी। वो मेरे पास आ गया है सर आ गया है, सर आप शेयर करिएगा, मैं हम लोग शेयर कर देता हूँ। हाँ, ओके सर। और भी बहुत सारी चीजें जो भी थी उन्होंने सब पे हमें सपोर्ट किया, लाइक वेदर वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपडेट करने की बातें हो या कुछ भी। ओके। और मैंने कमिंग ऑन संडे, सो प्लीज एवरीवन कम। हाँ, संडे को कौन कौन आ रहे हैं? और हम लोग को और भी अच्छा थोड़ा सा करना होगा, और खुद भी आना है प्लस अपनी फैमिली को भी लेकर आना है, क्योंकि संडे का जो हमारा लास्ट इवेंट है ना उसमें हमारी फैमिली आ सकती है, वो पीएनए मॉल में होगा, तो वहां पे हमारी फैमिली आराम से आ सकती है, कोई इशू नहीं है। संडे को हम लोग नहीं आ आप लोग नहीं आ पाएंगे? नहीं सर। कुछ ऑक्यूपेंसी है क्या? यस सर, हम लोग का सिलेक्शन हो गया ट्रेनिंग के लिए आईआईटी धनबाद में। अरे हाँ, तुम बता रहे थे। यस सर। तो कब निकलना है तुम लोगों को? सर 9 को रात में निकलेंगे। 9 को? चलो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर इन्वायरमेंटल इशू पे ही है, वाटर है और सॉयल है, एयर है और सीवेज ट्रीटमेंट पे प्रैक्टिस हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो कुछ सीख के आएंगे और सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग को। सीख के आएंगे और कुछ फिर करेंगे उसके बाद फिर से। यस सर। है ना, उसके ऊपर जॉब सीख के आएंगे, उसके
और एक कैंपेन डिजाइन करेंगे। यस सर, हम लोग कॉलेज में भी आज मैम से बात किए तो मैम भी बोली आप लोग जाइए, सीख के आइए, फिर क्लास भी लीजिएगा। ग्रेट, वंडरफुल। हम 3 लोग का सिलेक्शन हुआ है, मेरा, विकास कांत का और सुमंत पांडे का। ओके ओके, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, इट्स गुड। ऋतिक रहेगा है ना? यस सर, ऋतिक रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू। मैंने आज आप लोगों से ग्रुप में एक क्यूआर कोड शेयर किया है। Yes, sir. Yes, I sir. have seen that. I have shared that QR code and there is also another एक लिंक है जिसमें एक मैसेज जिसमें 3 लिंक है। एक लिंक है गूगल प्ले स्टोर में से ऐप डाउनलोड करने का, दूसरा है एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करने का ऐप, और तीसरा जो सबसे नीचे वाला लिंक है वो क्यूआर कोड जो है ना वही सेम चीज है। सो वो करेंगे तो यू कैन ओपन दैट स्वच्छ सर्वेक्षण वाला जो फॉर्म है, उसमें 4-5 सवाल रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी भरिए उसको, और दिस शुड बी आवर पार्ट ऑफ, क्योंकि ये चीज उसने मुझे क्या कहते हैं आज शीला रानी मैम ने मुझे इसके लिए भी बोला है, तो मैं तो बोला था कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो अब ये क्यूआर कोड हम लोग शेयर कर सकते हैं, वी कैन, नहीं तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कुछ उसके छोटे छोटे प्रिंट आउट्स ले आऊंगा और हमारा नोटपैड जो है उसके ऊपर हम लोग पीछे से चिपका सकते हैं। तो वी कैन, जब लोग वहां पे होंगे तो उनको बोलेंगे इसको स्कैन कीजिए और जो फॉर्म आ रहा है उसको भर दीजिए, है ना? Yes, sir. कॉलेजेस में भी इसको भरवाइए, सब लोग कॉलेजेस में भरवाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में कॉलेज भरवाइए। में सर बेटर रहेगा, कॉलेज में हम करवा देंगे, हम अपने कॉलेज में। हाँ, करवाइए आप लोग, सब लोग अपने अपने कॉलेज में भी करवाइए, अपनी लोकेलिटी में करवा सकते हैं, Okay, वहां sir. करवाइए। ठीक है, वाई वी वांट टू डू दिस, बिकॉज वी वांट टू गिव द एग्जैक्ट, हमें एक नंबर नहीं आना यार, मुझे नहीं आना एक नंबर, क्योंकि एक नंबर आने में क्या होगा, चीटिंग करना पड़ेगा, है ना? और चीटिंग करेंगे तो ये हमारा कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो रहा ना कि जिसमें अगर हम पास नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी या फिर नौकरी नहीं मिलेगी जिंदगी में। ये एक ऐसा एग्जाम है जहां पे अगर हम फेल करेंगे तभी हमें बेटर सर्विसेज मिलेंगी अपने लोकल बॉडीज से। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ गलत ही गलत देना, लेकिन जो रियलिटी आप देखते हैं, जो चीजें आपको सही में आप लगता है कि हाँ है, तो उसके बारे में हाँ लिखिए। जो आपको नहीं दिखता है, जिसके बारे में आपको सोचना पड़ रहा है, उसके बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि उस पर ना करना है कि नहीं करना है। लेट्स नॉट गेट इनटू द नंबर गेम, क्योंकि नंबर गेम में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ भाई ये काम तो यहाँ पे सर, यहाँ पे अच्छा हो रहा है, देन दे विल नॉट फोकस। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो नहीं हो पाएगा, तो जब उनको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है। सो दिस स्वच्छ सर्वेक्षण इज अ टूल जहां पे हम डायरेक्ट अपने पॉइंट्स वहां पे बता पा रहे हैं। ठीक है, उनके तरीके से 4 सवाल ही है, हम अपने सवाल उसमें हमारे जो ग्रीवेंसेस है वहां पे हम नहीं लिख सकते, लेकिन जो 4 सवाल है उसी के अगर हम सही जवाब दे दें तो, और ये कोई जरूरी नहीं कि सबको वही सवाल मिलेगा, अलग अलग लोग को अलग अलग सवाल मिलेंगे। ठीक है, सो प्लीज लेट्स डू इट। ये सिर्फ इसी मंथ का कैंपेन है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, मोर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड, एनीवन? वेयर आर अदर्स? बाकी लोग कहाँ गए? ओके, नुक्कड़ नाटक के बारे में तो, सर सॉरी तन्वी, गो अहेड। सब चले गए, मीटिंग सबको लगा कि बहुत पहले से चल रहा है, मेन पॉइंट आने पे टाइम लगेगा। बट यू आर मेकिंग नोट ऑफ इट, नो? अटेंडेंस का आप बना रहे हैं ना? यस सर, अटेंडेंस में मैनेज कर रही हूँ वहाँ पर। सर लेकिन ऐसा है कि स्टार्टिंग में सब थे और अटेंडेंस में उससे मार्क कर रही थी, अभी सब चले। ओके, तो फिर हाँ ये बात भी है, सर देखना एक पड़ेगा। चीज और कर सकते हैं हम लोग। सर पटना के 2 कॉलेजों में इन्वायरमेंटल साइंस का पढ़ाई होता है और वहाँ इंटर्न्स करना जरूरी होता है, लेकिन वो मिल नहीं पाता है जगह हम लोगों को, कहाँ से करें। तो कॉलेज सर अगर आप एक बार विजिट करें कभी,
तो बेटर रहेगा। हम लोग के लिए इंटर्नशिप मिलेगा और वॉलंटियर्स मिलेगा, और हम लोगों का यही पढ़ाई ही करना है, एनवायरमेंटल को लेके ही हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, आपके साइंस कॉलेज के कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, और एन कॉलेज से भी बच्चे आते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस से गया से भी, जो गया के जो भी टीम है हमारी, वो सारे इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे मेरे ख्याल से। सर पूरे बिहार में 3 ही कॉलेज में पढ़ाई ही हो रहा है अभी। ओके। एनवायरमेंटल का वो भी 30-30 सीटें हैं तीनों कॉलेज में। ओके। कोई बात नहीं, इट विल गेट बेटर स्लोली एंड ग्रेजुअली। अभी तो प्रोफेसर्स भी तो कम है, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाना कौन चाहता है? सर अभी गेस्ट फैकल्टी इन्वायरमेंटल के आने लगे हैं। हाँ, पहले तो वो भी नहीं आते थे। पहले सिर्फ बॉटनी के टीचर ही पढ़ाते थे हम लोग। इसलिए सर ट्रेनिंग हम लोग को मिल गया, हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कुछ सीख के आने का। नहीं, बढ़िया है, गुड। लेकिन हाँ, तुम ये जो बोल रहे हो ना, कॉलेजेस में मुझे विजिट करना चाहिए। ठीक है, आई विल कम टू योर कॉलेज वेरी सून। होली खत्म होने दो, होली के बाद आते हैं। गुड। एनीथिंग एल्स? Anyone, anything? सर मैं वो गाना सुनी जो शीला मैम ने शेयर किया सर, वो कवाली सॉन्ग लग रहा है सर, तो उसमें हम लोग कवाली कर सकते हैं। नॉट जोकिंग सर, 2 मिनट का सर, हम लोग अगर वो गाना कभी ज्यादा समय का नहीं है तो सर वैसा बीच में अगर सब लोग एक गा दे थोड़ा बहुत, सब लोग बैठ करके वहां पे जहाँ पे हमारा संडे का प्रोग्राम है, क्योंकि सर वहां तो बैठने के प्लेस है, बाकी जगहों पे तो नहीं मिल पाता है, तो 2 मिनट का एक थोड़ा वो भी हमारा एक्ट ऐड हो जाएगा, और उनका गाना दिया हुआ भी फायदा होकर गए। तो ये मैं गाना एक बार सबको सुनाऊं क्या? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. श्योर सर।
looks like it. I Yeah, have go ahead. an idea. हम लोग इसे यूज करने वाले हैं आपकी ये आवाज तो छूट रही हम है लोग तन्वी, क्या करें? थोड़ा धीरे हेलो बोलिए, आराम से बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। हेलो हाँ, go. हेलो या तन्वी गो अहेड। सर मैं बोल रही थी कि अगर हम लोग इसको यूज करने वाले अपने कैंपेन में, अगर हम लोग इसे गाने वाले हैं तो हम लोग इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि पटना बा हमार चलब इस चमकाई और स्वच्छ निरीक्षण में सही रैंकिंग पे पटना के पहुंचाई। नहीं 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 नहीं। सर हम लोग कर सकते हैं सर, उससे क्या होगा कि सर हम लोग एक लाइन बस ऐड कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि हम लोग फीडबैक तो सर सबको देंगे, सबको बोलेंगे ना कि फिल कीजिए, तो वो अगर ये लाइन पहले से सब कोई आता रहेगा और इधर से हम लोग कुछ बच्चे रहेंगे जो करवातेंगे, आप ये सुन रहे हैं ना, ये फॉर्म भी भर दीजिए, साथ में स्कैन कर दीजिए, 2 मिनट लगेगा। हाँ, या नाउ आई थिंक इट इज पॉसिबल। यस सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और मतलब लोग भाई रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा अच्छा ये लोग लाइन ये कह रहा है, इसका मतलब ये लोग ये करवा रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन ये लाइन हम लोग ऐड कैसे करेंगे सर? लेकिन सर ये सब जितना भी सॉन्ग हम ये इस टॉपिक पे सुने हैं ना, सब लोकगीत टाइप का है, तो इससे हटके भी सर हम लोग गाना बनवा सकते हैं। गाना हम कैसे बनवा सकते हैं? ये कव्वाली टाइप का सर, जैसे कुछ मेरे दोस्त लोग सिंगर हैं, वो लोग गाते हैं, तो वो लोग को बोलेंगे तो वो लोग बना देगा। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी दो कुछ स्टैंजास पहले से लिखे हुए हैं, वो मैं शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है? कुछ बच्चों ने प्रियदर्शनी और खुशी और किसने किसने लिखा था, और एक और कौन है वो हमारा? सर सम्राट लिखा था। सम्राट। सम्राट सर सम्राट का भी है और परवेज का भी है। सर परवेज भी लिखा था। सर स्क्रिप्ट रहेगा तो सर गाना दो दिन में बन जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट है। ठीक सर, दे दीजिएगा, मैं बोलूंगा दोस्त को वो ठीक है। रिकॉर्डिंग हाँ, तो करके। अगर अगले सैटरडे से पहले बन जाएगा तब तो मजा ही आ जाएगा। यस सर, है ना? ग्रेट। और ये तो लग रहा है कि उन्हीं का है, नीतू नवगीत जी का है ना गाना? यस सर, वॉइस आवाज यस सर, वॉइस से लग रहा है और यस लोकगीत सर, भी मुझे है। भी लगा। सर उनको आज एक अवार्ड भी मिला है सर। ओके, उनको नीतू नवगीत जी को? यस सर, सर हाँ, वो स्वच्छता से रिलेटेड अवार्ड मिला है उनको, आइकॉन ऑफ बिहार। ओह वाओ, क्या बात है, वंडरफुल। तो और तो आज चलिए अच्छी बात हो गई कि हम लोगों ने कुछ अब अगले प्रोग्राम के लिए वी हैव अ न्यू टूल, होपफुली एक गाना हमारा अपना होगा। ग्रेट। डू वी हैव एनीथिंग मोर टू बी डिस्कस्ड? वी स्टिल हैव सम टाइम। तन्वी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर ये गाना हमें यूज करने के लिए नहीं मिला है। यूज करने के लिए मिला है, हाँ यूज करना है इसको, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो आप एक लाइन जो ऐड कर रही है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण वाला, उसको इसमें ऐड कैसे किया जाए? तन्वी, तुम बात करोगे क्या इनसे, नीतू नवगीत जी से? तन्वी प्रियदर्शनी बात कर रहा था, प्रियदर्शनी से बात कर रही थी ना? यस सर, मैं तो उनसे बात की थी सर। हाँ, आई तो कैन उनको, टॉक टू हर, शी इज वेरी या वो तो फ्रेंडली उनको टाइप। ये वाला लाइन बोला ना, ये तन्वी आप प्रियदर्शनी को लिख के भेज दीजिएगा, और प्रियदर्शनी फिर आप बात कर लीजिएगा उनसे। ओके सर। एनीवेज, तन्वी, आर यू बैक इन पटना? Yes, I will come. I will You're in- visit that. Yes, sir, I will visit this post. ओह ग्रेट, वंडरफुल। चलिए बढ़िया है। Anything else? No sir. Shall we call it a night then?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you so much, guys. We had a good meeting today. We met two different personalities. One was Vivek, and one we have Radha ma'am here. So yeah, Radha ma'am wants to start something with the environment, and also as she is a civil engineer, also she is a researcher. She is doing a lot of research on water and other pollutants. So definitely we can get a lot of information from her. So Radha ma'am, maybe I would like, maybe why don't you come up with your findings one day and take a session with these kids on any pollutants, whatever you will feel like. Maybe we can start off with one topic, and Yes, slowly yes. and gradually we can develop a material which could be used lately also for the other schools and colleges. So we can be your guinea pigs. I would be glad to share the piece of work I have done. Yeah. And your student also was asking about environmental science, about designing. I think he is going for some occasional training. तो कभी हम लोग भी इस टॉपिक पर I can talk and I can just enlighten the young students of this group, and they can in turn tell to the others. So definitely I will be available for all these things. Definitely. Wonderful. Yeah, we would love to connect in a way wherein Yes. we can have a point of discussion wherein also discuss what exactly is the problem right now. Yeah. So once you can share this information with us through your research and all that, so these kids can come up with some of the other different ideas. Definitely. In last 30, Technically, like Good, sir. Darshan, we talk about environmental pollution, जो plastic है, solid waste है, जो sewage treatment plant है, उसको technically how do we give the treatment using some chemicals or organic chemicals or whatever, like aerations are there. How do we do the sampling of these pollutants? They are all very technical topic है. तो जो हम लोग NABL में और MOEF से भी हम लोगों को एक्रेडिशन मिला है, तो टोटली इट इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट विथ विच आई एम डीलिंग. और we deal with the pollution control boards and the officers and the industries. So it is a quite a different subject altogether. So I would be glad to share my experience with the young children, so that future में I want to see many of the environmental science students coming out with PhDs in environmental science, PhD in environmental engineering. I want to see a huge number, just like IT related people है, तो environmental में भी मैं बहुत सारे लोगों को देखना चाहती हूँ. And I will definitely share my small things, whatever I have learned and whatever I have researched all these years. So definitely, Darshan, I will be available. Thank you. Thank you so much. So, okay, guys. So I think we are getting more as a team, Radha ma'am joining us. I think our team is getting more interesting and we would have more serious discussions in coming futures. So yeah. And we have a lot of more serious problems to be solved. Yes. So definitely let's be that, we have this opportunity to do it together. So let's keep doing it. Thank you for the day. Good night. Good night. Good night. Good night, Thank you, ma'am. sir. Thank you. Good night, sir. Thank you. Good night, ma'am.